welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, we have key data that is lined up today from the US as well. How are you expecting the data to impact the dollar index as well as the commodities market as a whole? I think today's data is very, very important because from last 3 months, we all are waiting that there will be sign coming out of US that the inflation is peaking out or it's not going to go further, something like that. But every time we think that oil prices again starts moving up, the diesel prices also starts moving up. So in US, the petrol prices, they call it gasoline, which were 1.5 years back around $2.5, $3, which is right now $5. So unsustainable. The expectation that the US GDP will be 8.2% today, and previous was also 8.2%. So we have to see whether this number, if it turns out to be, say for example, 8.8%, so in that scenario, all the commodity will start to go down, because in that case the dollar index will strengthen. That means that the Federal Reserve will have to taper quite aggressively, and they will have to increase the interest rate so quite sharply. So today's data are very, very, very important. Any reading below 7.5 will lead to relaxation, will lead to some upside in gold and silver mainly. डॉलर इंडेक्स विल वीकन. सो आज जो डेटा आने वाला है उसमें 8.2% यूएस का सीपीआई एक्सपेक्टेड है. शाम को 6 बजे डेटा आएगा, और ये 8.2 वाला अगर 8.7, 8.8 आता है या 9% आता है तो हर एक कमोडिटी के प्राइस नीचे आएंगे, क्योंकि इसके कारण डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होगा तो सभी कमोडिटी नीचे आएगी. अगर यही डेटा 7.5, 7.6% आता है, ओके, in that case gold और silver जोर से बढ़ जाएगा. So we have to see what data is coming, wait for the data, और उसके बाद हमारा कॉल का वेट कीजिए, क्योंकि ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्री डेटा के पहले पोजीशन लेने का कोई मतलब नहीं है. जब डेटा आएगा उसके बाद पोजीशन लेना. मैंने क्या करना है आपको बता दिया. Right, so that is with regards to overall. So you're saying even in terms of base metals, there should not be any calls at the current moment? मेटल्स में शंघाई में लॉकडाउन चालू हो गया फिर से नए नए डिस्ट्रिक्ट में, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी में प्रेशर बनना चाहिए. सो मैं तो कॉपर बेचूंगा 785 में, 775 का टारगेट, 789 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप. मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा, और द डायरेक्शनल व्यू इज सेल. ओके, और लेड, जिंक, एल्यूमिनियम में व्हाट डू यू एडवाइस? सेम, एल्यूमिनियम 230, 229, जिंक भी 3 से 4 रुपये नीचे आ सकता है, लेड भी 2-3 रुपये नीचे आ सकता है. सो इवनिंग सेशन में सभी कमोडिटी के प्राइस, मेटल्स के प्राइस अंडर प्रेशर रहेंगे, ऐसा मेरा रीडिंग है. Kunal, coming to crude and natural gas, what is your view? नेचुरल गैस बुलिश, फंडामेंटल तेजी है. 695 के आसपास बाय कीजिए, 680 का स्टॉप लॉस रखिए, 725 का टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं. और क्रूड ऑयल, अगर यूएस का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है. पर अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो ऑयल 96, 96.50 लगा देगा. सो डिपेंड्स अपॉन द यूएस इन्फ्लेशन डेटा. राइट, एंड अर्लियर हमने जो कमोडिटीज और गोल्ड और सिल्वर की बात की, दैट इज फॉर द बेसिस द यूएस जीडीपी डेटा, राइट? नहीं, मैं तो इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर ही बैंक करता हूँ. इन्फ्लेशन के डेटा मेन है, जीडीपी से भी मेन. जीडीपी तो खराब ही आने वाला है यूएस का, इन्फ्लेशन का डेटा क्या आने वाला है वो मेन है. बेसिकली अगर यूएस में बढ़ रही है. ओके, एंड व्हाट आर द एस्टिमेट्स वी आर वर्किंग विद ऑन द यूएस इन्फ्लेशन डेटा? एग्जैक्टली 8.2, 8.3 एक्सपेक्टेड, प्रीवियस था 8.2 एक्सपेक्टेड है. सो ये 8.8 आ गया तो सब चीज नीचे आएगी. ये 7.6, 7.5 आया तो गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी आज.
Right. तो clear advice है कि wait and watch till the US inflation data is out this evening. Basis that you can take a call in terms of gold, silver, as well as other base metals and crude as well. Thank you, Kunal. Thank you to participants for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.